Fogatry International Center Fellow. He is one of the editors of the journal Mekal Insights, published by Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. He is also the life member of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, New Delhi, Northeast Indian History Association and Manipur Historical Society. He is the convener of Intellectual Forum of Northeast Manipur, and his latest author, Government of Tripura. He is a doctor by profession, child specialist, worked in Delhi government as medical officer, also graduated in law, has written books, novels, stories, and translated many books in Kokborok. One of them is Bhagavad Gita, founded English medium school. चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम त्रिपुरा सुंदरी के लिए एक मंत्र का जाप करूंगा। इसके बाद अपने मानसिक पूजा के भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जिस प्रकार हम प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। मानसिक पूजा में मान लीजिए कि किसी को शिव जी का पूजा करना है, तो हम ये बोलने के लिए करते हैं ये प्रेयर। आप शिवलिंग के समक्ष जा रहे हैं और जाने के पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शिव जी, आप मेरा ये जल स्वीकार करिए। सबको चंदन लगाइए, फिर भांग का प्रसाद चढ़ाइए और ये मन में सोचिए कि जो भी सबसे अच्छी मिठाई की दुकान आपके घर के आसपास आपके शहर में हो, उस मिठाई के दुकान से ले आए हैं, मिठाई प्रसाद चढ़ा रहे हैं प्रभु को। मन ही मन सब कुछ सोचना है। बोल रहा हूँ। इसके पश्चात आप लोग जल चढ़ाने के बाद उनको पुष्प भेंट करिए और अब यह महसूस करिए कि माँ पार्वती, गणेश जी और उनका पूरा परिवार, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग आपके समक्ष बैठे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। अब आरती आप शुरू करिए। घी का दीपक ले लिया आपने और सभी का दीपक से आरती कर रहे हैं। सभी आप लोगों से बहुत प्रसन्न हैं। अब आपने ये सोचा कि को नौकरी मिल जाए, कोई ये सोचता है कि मेरा बच्चा शैतानी कर रहा है वो ठीक हो जाए, कोई ये सोचता है कि मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। तो ये सब सोच रहे हैं और यह फिर आप ध्यान में सोचिए कि प्रभु शिव जी आपको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ, आपका यह कार्य हो जाएगा। माँ पार्वती हाथ उठाकर यह बोल रही हैं, गणेश जी यह बोल रहे हैं। तत्पश्चात आप धीरे धीरे आँख खोलिए। इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। हम लोग इसको प्रैक्टिस 1 घंटे के लिए करते हैं। यह मेरे पूर्वजों ने इसलिए तैयार किया था ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनका भी अधिकार पूजा का होता है, ताकि आडंबरों से छुटकारा मिल सके और लोग दूसरे धर्मों के प्रति आकर्षित ना हो सकें। कहीं कहीं यह होता है कि पूजा में बहुत पैसे की आवश्यकता होती है तो वह पूजा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए चाहे वो गरीब हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी यह पूजा कर सकता है। यही हमारी परंपरा है, यही हम करते हैं। घरों में जाके हम रहते हैं और कई घरों के लोगों को बुलाकर अपने यहाँ सभी लोग एक घर में आ जाते हैं, वहाँ पर उसको उठान पूजा बोलते हैं। यही हमारा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, it's working now. Thank you very much, sir. Now I would like to invite our first speaker, Sri Shandeep Kavishwarji, to have a few words.
उपस्थित सभी संतवृंद, मान्यवर, सभी माता बहनें, सबको नमस्कार। जो विषय दिया हुआ है चैलेंजेस का नॉर्थ ईस्ट की फेथ एंड ट्रेडिशंस पर, एक तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने नॉर्थ ईस्ट की जो परंपरा है, जो धर्म संस्कृति है, उसको जिस ढंग से नैरेट किया गया है, उस नैरेटिव्स को बदलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी तक नॉर्थ ईस्ट की धर्म संस्कृति परंपरा या उसके जो जीवन मूल्य है वो लिविंग ट्रेडिशंस है, ऐसा नहीं कि डेड हो गए। लेकिन नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि नॉर्थ ईस्ट पूरा बदल चुका है, नॉर्थ ईस्ट ने अपने रूट्स को खो दिया है और नॉर्थ ईस्ट अब भारत की सनातन परंपरा से कट गया है, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया और उसमें हम फंसते गए। जैसे एक कुछ दिन पहले एक वीडियो में देख रहा था, एक अफ्रीकन लेडी का, बहुत फेमस सिंगर है, वो बता रही है उस वीडियो में द कंकरर राइट्स हिस्ट्री। फिर वो आगे बोलती है, नाउ यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल हु केम टू इन्वेड अस विल राइट द ट्रूथ अबाउट अस, दे विल नेवर, because they have to prove their invasion or they have to justify their invasion. We never write our history. The white man came and they wrote our history. फिर वो आगे बोलती है कि nothing, in fact, you know nothing about anything, about any place in this world, only you come to know. And वो रिडिकुलसली मतलब एक बोल रही है, वो बोलती है नथिंग लाइज बिफोर द व्हाइट मैन केम देयर, द व्हाइट मैन कम्स एंड ही से पुफ आई हैव डिस्कवर्ड यू, नाउ यू एग्जिस्ट। तो ये हमारी कहानी है सबकी। हमको भी ये लगता है कि बाहर के लोगों ने आकर हमारे बारे में जो लिखा वही सही है, उसके अलावा कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो सनातन संस्कृति ने, यहां हम बड़े बड़े वेदों के वाक्य जब बताते कि माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, ये जब बताते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में ये बोलता कोई नहीं लेकिन करता हर रोज है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, हम बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब जगह वो परवेडेड है, ऑल परवेडेड। तो नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति जब शिकार के लिए या नदी में मछली मारने के लिए जाता है या पहाड़ पर चढ़ता है, तो मैं अरुणाचल में था 15 साल, तो मैं गया एक बार उनके साथ, थोड़ा सा बॉईल करने के लिए सब्जी ऐसा लेकर निकले, 2-3 दिन रहना है जंगल में। तो पहाड़ चढ़ने में तो चढ़ने जा रहा था, तो उसने कहा रुको रुको भैया, वो अपने पीछे से भात निकाला, उस पहाड़ के वहां रखा, फिर उसको हाथ जोड़े और एक 10-15 मिनट थोड़ा पूजा वूजा करके आगे निकले। मैंने कहा ये क्या किया? तो बोले इस पहाड़ देवता की मैंने परमिशन ली है, मैं आप पर पैर रख रहा हूं, मैं मेरी आजीविका के लिए शिकार करने जा रहा हूं या कुछ सामान कलेक्ट करूंगा, उसकी अनुमति हमको दे। अब ये कितनी ऊंची फिलॉसफी है कि हम केवल बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो आचरण में रख रहा है। उसको ये श्लोक नहीं आता होगा, इदावास्यमिदम सर्वम, उसको नहीं आता होगा, लेकिन उसके आचरण में है। एक उदाहरण मैं हमेशा बताता हूं कि जनजातियों में जो धर्म संस्कृति या स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो कितनी उच्च कोटि की है। हम बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपको आश्चर्य लगेगा जानकर ये, आज भी कुछ लोग बोलते कि ऐसा है क्या? तो ये सहज भाव से, मैंने भी ऐसा ही पूछा। यहां जनजातियों में या कहीं भी भारत में जनजातियों में भगवान की जब प्रार्थना करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान से कुछ अपने लिए नहीं मांगते हैं। ये आपको आश्चर्य लगेगा। कहीं भी आप जाइए और किसी भी जनजाति को पूछिए पूजा करते समय कि आपने भगवान से क्या मांगा, बोलता है भगवान से क्या मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। तो हमको आश्चर्य लगता है प्लेन्स के लोगों को, बाहर के लोगों को, अरे भगवान से कुछ नहीं मांगते तो पूजा किस लिए है? तो वो बोलता है पूजा तो भगवान के लिए है, भगवान की आराधना है, भगवान का मैं वर्णन कर रहा हूं कि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, जो एट्रीब्यूशन हम देते हैं वो सारा। तो मांगा क्या? तो बोले मांगा कुछ नहीं, उनके कंसेप्ट में नहीं है मांगना।
ये हमको लगता है कि भगवान से थोड़ा एक पाव पेढ़ा चढ़ा दिया तो मुझे पास कर दो, 200 रुपए की हमने रिसीव काटी कहीं तो हमको नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस सफल हो जाए। तो ये बहुत ही छोटी बात हम मांगते रहते हैं, जबकि जनजातियों की परंपरा में आप डॉक्टर अतुल जी हैं यहाँ, इनको पूछ सकते हैं कि जनजाति मांगता क्या है भगवान से। वो बोलते मांगते तो कुछ नहीं है, कभी नहीं मांगते। मतलब ये बहुत ही कितनी उच्च इसको विचारधारा हम कह सकते हैं, ये नहीं है कहीं भी। और दूसरा हम बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका उदाहरण यहां कैसे है जनजाति धर्म संस्कृति में? यहां मैंने एक डांग का उदाहरण दिया था पिछली बार। डांग में अपने एक जो ये है वो डांग में गए थे सर्वे करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स। तो उन्होंने एक जनजाति महिला को घर में गए डांग के एरिया में, उनको पूछा कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स है तो कुछ बता, आपने फोन कुछ बताया नहीं? तो मेंबर्स है तो इसने कहा कि हमारे घर में 23 मेंबर है। तो ये लड़का सर्वे करने वाला है, 2-3 लड़के थे, इन्होंने देखा कि घर में तो 5-6 लोग दिख रहे हैं, आप बोल रहे 23 है। तो बोलते हाँ 23 है। बोले कैसे गिनाइए? तो ये हम 6 लोग हैं घर में, ये पति है, मेरे बच्चे वगैरह, ये मेरी 2 मुर्गियां हैं, ये 3 बकरियां हैं, ये 6 पेड़ है। वो सहज भाव से बता रही थी, मतलब ऐसा वो कोई ड्रामाटाइज करके ऐसा नहीं है कि इसने पूछा तो मैं इंप्रेशन करने के लिए कुछ जवाब दूं, ऐसा नहीं था। इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं था वो। तो उसने पूछा ये परिवार है? बोले हाँ। आपने मेंबर पूछे तो मैंने बताया, आप पूछते कि मनुष्य कितने तो मैं बताती 6 है, लेकिन आपने परिवार पूछा ना। तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हमें आचरण यहां है। तो ये जो मैंने कहा कि जीवन दर्शन या जीवन मूल्य कितने उच्च है, इसके ये उदाहरण है। इसलिए ये संस्कृति कितने भी चैलेंजेस होने के बाद आज भी जिंदा है। हाँ, भले ही उसकी पूजा पद्धति आज बदल गई है, जोर जबरदस्ती कहिए, एल्यूरमेंट से कहिए, कोई चर्च में जाने लग गया या कोई मुस्लिम बन गया, अलग बात है। ये है, ये खतरा तो है, क्योंकि ये बाकी विचारधारा है जो इसको सहन नहीं कर सकती है। कल जो बात आई थी टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस तो बहुत छोटी चीज है, हमारे यहाँ रेस्पेक्ट है सबके बारे में। तो इनको हमको समझना पड़ेगा। अब ये कहां से बदलना या कहां से खतरा शुरू हुआ, तो मोटा मोटी हम समझ सकते कि जैसा बताया कि नॉर्थ ईस्ट में तो कभी मुगल आक्रमण तो बहुत बार किया उन्होंने, लेकिन जीत नहीं पाए नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट के वॉरियर्स ऐसे थे। लेकिन जब चर्च आया यहां ब्रिटिश सत्ता के साथ, तो रॉबर्ट रीड नाम के एक गवर्नर थे आसाम के। उस गवर्नर ने एक योजना बनाई, वो डॉक्यूमेंट है रिटन। उस स्कीम का नाम था, उस प्लान का नाम था न्यू इंग्लैंड कॉलोनी और क्राउन कॉलोनी प्लान। ये क्राउन कॉलोनी प्लान क्या था? तो उन्होंने कहा कि देखिए, रॉबर्ट रीड ने लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत को आपको यदि अपने कब्जे में रखना है तो यहां इतनी डाइवर्स कल्चर है और इतनी डीप रूटेड सारे बातें हैं, परंपराएं, कि इसको उखाड़ फेंकना मुश्किल है और ऐसे देश पर राज्य करना भी मुश्किल है। आपको यदि इसको कब्जे में लेना ही है तो आपको कहीं ना कहीं सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक जैसा बनाना मतलब क्या? तो एक कल्चर के बनाओ सबको। तो उनको लगा कल्चर के बनाओ इसका मतलब इनकी पूजा पद्धति या भगवान बदलने से ये सब हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक 10,000 मिशनरी भेज के सारे कल्चर को एक इस बैनर के अंडर लाना और सबको एक जैसा बनाना, तो हमारा राज करना आसान हो जाएगा। ये प्लान था वो, और उसके अनुसार काम भी हुआ। और हम सब जानते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में फिर एक चर्च के मिशन ने या जो भी अब्राहमिक रिलीजन्स हम कहेंगे, उन्होंने एक प्लान जो चला है उसके अंतर्गत एक पहले जनजातियों के फेथ को, कल्चर को, हिस्ट्री को उन्होंने एक थ्रेट दिखाया कि आपका है क्या? आपका कोई धर्म ग्रंथ नहीं, आपका कोई भगवान साकार रूप में नहीं, आपकी कोई एक निश्चित पूजा पद्धति नहीं, आपका कोई मंदिर नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं कि जहां एकत्रित आकर आप पूजा करते हैं। त्रिपुरा में है, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये बहुत ना के बराबर है, निराकार की पूजा रहती थी। तो इन्होंने कहा आपका तो कुछ नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? तो भोले भाले लोग थे, हाँ हमारा तो कुछ नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो हमारा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने कहा पहले कि जैसे वो आए नहीं तो कुछ भी नहीं था,
वो जब बोलेंगे कि हाँ मैंने आपको डिस्कवर किया है, मैंने आपके बारे में लिखा है, तो हम एग्जिस्टेंस में आते हैं। ऐसा धारणा थी, आज भी है। तो फिर चर्च ने कहा कि ठीक है, हम आपको आइडेंटिटी देते हैं, एक आसान भगवान देते हैं कि बस हर रविवार आइए, थोड़ा प्रे करिए और आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो सैल्वेशन विद इन आवर्स ओनली, ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। कि उनका कहना है हमारा एक भगवान, एक धर्म ग्रंथ, एक पूजा पद्धति, एक प्रेषित, इनको आप मानेंगे तो आपको जीने का अधिकार या सैल्वेशन का कोई रास्ता मिल सकता है, इसके अलावा नहीं। बाकी जो है वो सब शैतान है, वो सब बारबेरिक है, वो सब एक जिसको पिछड़ा हुआ बोलते हैं वो है, वो अमानवीय है। हम केवल सुसंस्कृत है और उस नाम पर फिर धीरे 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 एल्यूरमेंट से कहिए, फोर्सफुली कहिए, ये सारे जो एंशिएंट ट्रेडिशंस कल्चर थे इस पर इन्वेजन शुरू हुआ और स्थिति यहां तक आई कि अब हमको ये एक जैसा हमारा धर्म हो गया तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुई। हमको लगता है कि अंडरग्राउंड मूवमेंट्स अलग और ये आक्रमण अलग, धार्मिक, ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा जो फ्रीडम फाइटर थे, जिनके नाम से आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, वो बिरसा मुंडा स्कूल में पढ़ते थे तो उनको क्रिश्चियन बनना पड़ा, उनका नाम क्रिश्चियन लगाना पड़ा। जब स्कूल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये पास्टर जो है स्कूल का, ये फादर जो है, ये हमारे भगवान को गाली देते हैं, तो मैं स्कूल में नहीं रहूंगा। वो बाहर आए। फिर बड़े जैसे हुए तो उन्हें एक आंदोलन चलाया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कि हम लगान नहीं देंगे, हमारे पर क्यों जोर जबरदस्ती है, हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। और एक 40,000 लोगों को एकत्रित करके लड़े वो। तो वो बोलते थे साहब साहब एक टोपी। इसका मतलब क्या है? तो बोलते थे ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है इसकी टोपी और ये जो चर्च का पास्टर है इसकी टोपी, ये एक है। मतलब आप समझिए कितने पहले संकट को जनजाति व्यक्ति ने पहचाना था। साहब साहब एक टोपी का मतलब ये दोनों एक है और ये दोनों हमको मिटाने के लिए आए हैं। और ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आई कि नागा फॉर क्राइस्ट, मिजो नेशन, कार्बी नेशन, बोडो नेशन, ये जो नेशन की कंसेप्ट है कि हम कम्युनिटी नहीं है, वी आर द नेशन, हम इस राष्ट्र के नहीं है, इस सनातन संस्कृति के नहीं है, हम सेपरेट है। ये धीरे 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 जहर भरता गया और ये एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ा चैलेंज इन धर्म संस्कृति के सामने आया कि अब अपना तो सब भूल रहे हैं हम। जो एससी जमीर थे नागालैंड के, चीफ मिनिस्टर भी रहे, बाद में गवर्नर भी रहे, उन्होंने भी कहा कि हम तो भूल गए सारा। पहले लगता था कि ये सारा बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो सारा हमारा वॉश आउट हो गया, अब हम क्या करें? तो इस पर फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इस पर भी उपाय हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस है तो उसको सोल्यूशन भी है। तो 1899 में सेंग खासी मतलब खासी जयंतिया में एक मूवमेंट शुरू हुई इंडिजिनस फेथ ऑर्गेनाइजेशन की। उसके पहले जमातिया हौदा का हमने सुना है कि 450 साल पहले जमातिया हौदा शुरू हुआ है। उसके बाद हर एक स्टेट में अपने अपने परंपरा को, धर्म को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए मूवमेंट शुरू हुई। मिजोरम में रानी रोपिलियानी का नाम तो हमने सुना है कि 100 साल पहले उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, अपने देश को, अपनी जमीन को प्रोटेक्ट किया। उनको अंग्रेजों ने कहा कि हमसे डील कर लो, आपका ही राज रहेगा, आपके पति तो मारे गए लड़ाई में, आपके बेटे भी मारे गए, अब आप बच्ची है, आप हमसे एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि राज गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा, राज आप रानी रहेगी। तो उन्होंने कहा ये धरती मेरी माँ है, माँ का सौदा नहीं करूंगी। अब उनको किसने सिखाया था? वो हाइपो जादोनांग मणिपुर के एक छोटी पहाड़ी में कम्बिरान नाम के एक छोटे गांव में रहते थे, केवल 25 साल का जीवन। वो वहां रहते थे, उन्होंने कभी गांधी जी को देखा नहीं, लेकिन वहां वो बोलते थे आइपो गांधी जिंदाबाद, अपाओ गांधी जिंदाबाद, मतलब बाबा गांधी जिंदाबाद। उन्होंने गांधी जी को देखा नहीं। वहां उधर राघोजी भांगरे जो महाराष्ट्र में फ्रीडम फाइटर हुए, वहां रामजी गोंड हुए, तो रामजी गोंड नाना फडणवीस को मिलते थे, वो कब मिलते थे पता नहीं, तात्या टोपे या तंट्या भील को मिलते थे पता नहीं। तो जनजाति और गैर जनजाति, इनका जो एकात्मता थी, ये प्रयासों से नहीं थी, ये नेचुरली थी। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने मिजोरम कहा, तो मिजोरम में अभी एक 40 साल पहले, हमको लगता है मिजोरम हाथ से गया, लेकिन मिजोरम में उन्होंने एक लिस्ट बनाई तो 33 विलेजेस मिले कि जहां अपनी धर्म संस्कृति का पालन मिजो लोग करते हैं। उन्होंने अपना संगठन शुरू किया, नुन्ना लालनम,
मिजो साखुआ बोलते हैं, मिजो स्वधर्म। नागालैंड में रानीमा गाइदिनलियो हाइपो जादोनांग, उन्होंने एक संगठन शुरू किया, जेलियांगरोंग हराक्का एसोसिएशन, जो अपने मूल संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहा है। उनके आज 36 प्रेयर हॉल बन गए हैं नागालैंड और असम में मिलाकर। फिर इधर अरुणाचल में एक ऑफिसर थे, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर तालोम रुकबो, उन्होंने अपनी नौकरी छेड़ी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा देश, मेरी आइडेंटिटी, मेरे संस्कृति को बचाना है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने दोनी पोलो एलम के बांग 1986 में शुरू किया ये नाम का संगठन। आज वह उन्होंने कहा कि हमारी कोई साकार पूजा पद्धति देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति को एकत्रित आने का कोई जगह नहीं है, केवल एक बार साल में पूजा करने से नहीं होगा। तो साप्ताहिक प्रार्थना गृह उन्होंने शुरू किए, उसको उन्होंने नाम दिया गांगिन, दोनी पोलो गांगिन। दोनी मतलब सूर्य, पोलो मतलब चंद्र, तो उसकी उपासना वो करते हैं दोनी पोलो की। तो उसके प्रेयर हॉल शुरू है। आज 550 प्रेयर हॉल अरुणाचल में बन गए। मेघालय में सेंग खासी सेंग राज है, सेंग खिलांग है। इधर आसाम में लक्ष्मण संघ है, बोडो में बाथो धर्म है, फिर ब्रह्म समाज है। इधर मणिपुर में तिंका और अंगवांग चापरियाक नाम का संगठन है कि जो अपने इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए कार्य कर रहा है। उनके भी लगभग एक 27-28 प्रेयर हॉल अब बन गए हैं। तो हर स्टेट में, जैसे नागालैंड का उदाहरण दिया, हर स्टेट में, सिक्किम में भी, वहां हर एक जनजाति का अपना अपना धर्म संस्कृति का संगठन है। ऐसे सभी जगह अंगामी में है, इधर चाकेसांग में है नागालैंड में। अपने को नागालैंड भी लगता है कि चला गया, ऐसा नहीं है। दिमासा में है, बोडो में है, शिवराय बिस्मय बसुंग का दिमासा में संगठन है। ऐसे ही हो रहा है। तो हर जनजाति में अपने रूट्स को पकड़ कर रखना और उसको आगे बढ़ाने की मन में जो प्रबल इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ रही है जगह जगह। इसलिए चैलेंजेस है तो उसके सॉल्यूशंस भी सामने आ रहे हैं। इन सॉल्यूशंस को हमने समझना पड़ेगा और इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये सनातन या नॉर्थ ईस्ट की धर्म संस्कृति परंपरा जिंदा क्यों रहे, ये केवल 1 मिनट में मैं रखूंगा, फिर मेरा समय समाप्त हो रहा है। तो हम सब जानते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये झगड़ा है ओनली और अल्सो का। पूरे विश्व में जो आज अनरेस्ट है या क्राइसिस है या जिसको हम क्लैशेस हो रहे हैं, द क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसी जो हंटिंगटन ने किताब लिखी है उसमें उसने भी कहा ये झगड़ा है ओनली और अल्सो का। तो अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं सैल्वेशन विद इन अवर्स ओनली, थ्रू अवर्स ओनली। तो ये हमारा ही सच, बाकी सब झूठ। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति या परंपरा के जो भी जितने भी पंथ है जो भारत की धरती से निकले हैं, वो कहते हैं सैल्वेशन विद इन अवर्स अल्सो। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सबको मिलकर। तो यदि विश्व को जीवित रहना है, विश्व में शांति रहनी है, हार्मनी रहनी है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो ओनली से नहीं होने वाला है, अल्सो से ही होगा। तो अल्सो को यदि जिंदा, मतलब अल्सो को यदि हम रखते हैं तब ये विश्व आगे बढ़ेगा, अन्यथा सारे एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक विनाश होने की संभावना है। तो अल्सो के पक्ष में खड़े रहने वाली ये परंपराएं हैं। कभी यहां ऐसे नहीं हुआ कि देव वर्मा ने कहा कि हमारा बाबा गढ़िया ही सच है, बाकी वो दोनी पोलो वगैरह झूठ है नॉर्थ ईस्ट का। कभी दोनी पोलो वालों ने क्या नहीं कहा कि वहां सेंग खासी का जो भगवान है वो झूठ है, हमारा ही सच है, कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो नेचर में नहीं है, वो सोच में नहीं है, वो अपनी थॉट प्रोसेस ही नहीं है। इसलिए इस परंपरा को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना ये विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है, केवल आइडेंटिटी के लिए नहीं। केवल कपड़ा कैसा, खाना कैसा, पहनना कैसा, घर कैसा, फेस्टिवल कौन से, इस पर रिसर्च नहीं होता है, इस पर डॉक्यूमेंट, ये तो कोई भी कर लेगा। ये रिसर्च नहीं है। रिसर्च है जो मैंने कहा उनका जीवन दर्शन, प्रकृति के प्रति क्या है, दूसरों के प्रति क्या है, भगवान के प्रति क्या है। तो तीनों उदाहरण मैंने दिए आपको। प्रकृति के प्रति कैसे उदाहरण है, भगवान के प्रति उनकी सोच क्या है, और दूसरों के प्रति क्या सोच है। तो ये सोच जिंदा रहना विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है। इसीलिए ये सारे जो आज नॉर्थ ईस्ट में लगभग 110 स्वधर्म संगठन चल रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में एक जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच है कुछ, जो इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। पिछले ही साल वॉइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इस नाम से 3 दिन का वर्कशॉप गुवाहाटी में हुआ, जिसमें 89 ट्राइबल कम्युनिटीज के फेथ एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस आए थे, और उन सब ने मिलकर ये रिजॉल्व किया वहां कि हाँ, हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मॉडर्न उसमें एक बदलाव कर सकते हैं बाहरी, लेकिन उसका जो कोर है वो सेम रहेगा।
तो मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि एक अच्छी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में चल रही है, ऐसे कार्यक्रम बार बार नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में हो तो इन मूवमेंट्स को एक बल प्रदान होगा और इन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे तो विश्व कल्याण होगा। यह अपेक्षा व्यक्त करते हुए आप सबको एक बार धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। Thank you very much, sir. It was a wonderful speech. Now I would like to request Sukadev Sharma Hanjamam to deliver his valuable speech. Good morning, everyone. I'll be speaking today on Vaishnavism, Manipur Vaishnavism in Manipur, but I will not go into the theoretical aspects because yesterday one of the speakers, Sri Kakching Gabram Rajamani Sharma, he must have covered up most of the theoretical aspects. Today I just want to highlight, since the session is on challenges before faith and tradition in Northeast Bharat, I just want to highlight what is the situation of Manipur Vaishnavism. Before that, I'll just go through how Vaishnavism came to Manipur and how it has rooted in Manipur and its diasporic population in Myanmar, Bangladesh, and Indian state of Assam and Tripura. Tripura also, we have very good diaspora here, since maximum of a matrimonial relation of royal are from Manipur. So we have a very good population here, and also in Assam, particularly in Barak Valley. So let me begin by saying that many people believe that the Indic tradition of Manipur came from West, particularly from Bengal. People thought the idea spread from Bengal to northeastern and it goes like that. But in Manipur context, let me share you that it was as early as 1470, the idol of Bhagwan Vishnu was gifted from Myanmar, particularly Kingdom of Pong. It was in Upper Myanmar site. So as part of the celebration of winning the battle against different small principalities in Myanmar, they have exchanged ideas and they have sit together, and King of Pong, what you call as San, particularly locally it is called Pong, but it is called as San. San Kingdom, it is in the northern side of Burma, particularly on border of China, Yunnan and all that side. So that time it was quite powerful, so they have a relation with that, and they have divided over the territory where they win. And part of the celebration, they have shared different items. King of Manipur give different items to the King of Pong, and King of Pong give different items to the King of Manipur. And in that, the idol of Bhagwan Vishnu was there. But that time, Manipur did not started much of the Indic religion practice. So, but the population of our Sanatan Dharma was there. So king invited one of the Brahmin family and they started the practice. And now the place where it is worshipped is called as Bishnupur. It is called Bishnupur district. And we still have the temple, the first built temple of Vishnu. Now it comes under Archaeological Survey of India as a central list. So from that onwards, the family was given name as Furai Latma. Furai means building. So those who worship God in that building, they were given a name and they were assigned to worship this God, God Vishnu. Now the God is with the Maharaja of Manipur in his palace. And the temple is now with the Archaeological Survey of India, and we're trying to revive it as a living temple so that we can practice the Vishnu worship, and also we can remain the temple as it is. So last year we tried to have a puja kind of thing. Since it is under Archaeological Survey of India, we did as a cleaning activity and we did a small exercise.
So after that, many tradition of Manipur came, many tradition of Indic religion came to Manipur. The Vishnu worship did not continue for long, or it did not reach the local population, because the relation between the king of Manipur and the king of Pong, king of San, was mostly on political terms. So religious-wise, the emphasis was less. But later on, different faith have come from the western side, as Bengal side. Now, at that point of time, it is not West Bengal or East Bengal, it was the Bengal. A different tradition came, and the first king who adopted Hinduism is King Charai Rongba at the end of 16th to 17th century. But he did not emphasize much on the population. So he adopted it, the palace adopted it, the nobles adopted it, but he did not force it on to the people. He did not say you have to do it. You have to learn it, and the next king, what you call as king, what in local term we call as King Pamhaiwa, he was the one who made it as a state religion. Then everyone adopted it. But when the next king came, Rajasri Bhaigachandra, what we call as Rajasri Bhaigachandra, Raja Rishi, he was a king, but at the end of his kingship, he gave up his idea of king, and he wished to go to Radhakunda, but he died at Navadip. And there he got the name as Rishi. He was a king, so we call now as Raja Rishi. He was a king, but he was a Rishi. So popularly now people call as Rajasri Bhaigachandra. He is the one who conceptualized all this idea about Natta Sankirtana. He was the one who popularized this idea of Ras Leela. People thought Ras Leela is a dance. Yesterday, I think our speaker also must have emphasized Ras Leela is not a dance, it's a devotion. When you see anything about Ras Leela, at the end you will see all pujas will be going on. It is not that people just finish the dance. At the end, Arati will be there, everything will be there, then the dance conclude. Now, earlier it has to be done only at the mandap. Now, commercially, a lot of things has done, a lot of things has changed. Institutions are coming up to train all this, but beginning-wise, it has to be done only with the mandap, and it is not for entertainment purpose. It is to serve the god. The different forms are there, but still some forms are preserved only for God, so only for specific days and only for God. And it has to be done at the mandap only. So when King Bhaigachandra came to power, the first thing he did is he tried to establish different institutions for Indic religion, Sanatan Dharma, and also he tried to spread out to different areas. And from that onwards, Navadip was a famous place, Puri was a famous place. And later on, we went up to Radhakunda, Vrindavan and Radhakunda. Radhakunda, there are a lot of akharas from Manipur still now. And the king developed his own temple so that people go for pilgrimage. And Navadip is quite famous for Manipur because when Rajasri Bhaigachandra was exiled, he came to Assam, what we call as Tekhao. Locally it's called Tekhao. He came to Assam, and from the support of the king, he regained back the kingdom. So as part of all this political strategy, the people who are, the king who ruled in Manipur that time, he told the king of Assam, he is not a real king. So if you want to try out whether he is a real king, you should do some exercise. And we have a famous statue in Manipur we call as Rajasri Samufava. Samufava is Rajasri king taming of wild elephant. So the king of Assam tried, if you can tame this wild elephant in Assam, then we will recognize you as a king. So at that time, the idea of Radha Krishna was very popular. So it was said the king offered prayer to the god, and the next day he could tame easily the king. So Assam king recognized him and returned his support so that he can win back. So once he reached Manipur, he forgot that he need to build temple for Bhagavan Krishna. So there was a lot of stories now. In Govindaji temple, we have
among the bog we have one dishes of bamboo, banana stem. The story came from this idea of Bhagavan Krishna, because when Bhagachandra assumed the king, after he promised that he will build a temple, once he was busy with administration, he forgot that he has to do something for the god. So he was reminded by a story from the hill areas. One tribal lady, he reminded that this is something he has to do. So he called the tribal lady, he invited in the palace, then he explained this is a situation that you have to build. So what happened then next is, Bhagavan came to Rajashri Bhagachandra. He told that if you want to build my idol, you have to go to a particular place, what we call as Kaina. Kaina is a pilgrimage site in Manipur. You have to go to that particular place. There is a jackfruit tree. From that jackfruit, you have to build. You have to make idols of me, so that you can worship in the palace. So, but according to his dream, he went to that place. He bring the jackfruit trees, and he came to palace. But when he prepared that idol, again it was said that it is not like what I thought. So they prepared 7 idols on that. From the same jackfruit tree, they prepared 7 idols, and 7 idols, the second one remains with the palace, what we call as Sri Sri Govindaji temple now. And the other remaining 6 went to different places. And one came to Kolkata, Navadip, we call as Anu Prabhu temple. So this now the daughter of Rajashri Bhagachandra used to worship that one, but now this tradition still continues. And different other religion went to different place. So for today's thing, what I want to emphasize is, once the Sri Govindaji temple was established in 1776, it moved along with the king. It was a royal temple, but everybody was allowed to worship. And since Manipur is a kingdom in Indo-Burma border side, there are a lot of attack between Burma and Manipur also. Manipur will take over different places of Burma. Burma will take over different places of Manipur. And Manipur, when they occupy Manipur for 7 years, most of the royal palaces, people, king, royal family, they moved to Kachar. So Kachar, we have a very good population. Kachar now is divided into different districts, but still in the Barak Valley, we have a very good population. And Rajashri Bhagachandra emphasized that he is not the king. The king is Sri Sri Govinda. So when we go for war or when we go for anything, we used to chant Sri Govinda na joy ore. Means the chant gives to Sri Sri Govinda. We don't chant Maharaja ki joy. We chant Govinda ki joy. So Rajashri Bhagachandra, he is the first king who said ki I am the servant of the God and God is the king. So whatever we do in the kingdom, we do in the name of Sri Sri Govindaji temple. Govindaji, and we have the temple. And temple, since Sri Sri Govindaji is a king, anything happen, it moves along. Because there is a... नहीं है. गोरखनाथ जी ने कहा आसन है ना रुजुहंती, आसन से रोग बीमार दूर होता है. डिटेल इसका है, इसका अभी बोलने का टाइम नहीं है. गोरखनाथ जी ने कहा ऐसे आसन जो है इसका आविष्कार क्यों. Of course, I'd like to thank our moderator, Dharmguru Shri Gautam ji, for really taking out the time and presiding over this panel. For me, this is a very humbling experience. But as we've already been given a warning about our time, and we must keep to our time, without much ado, I'd like to really get to the topic of our panel, which is challenges before faith and traditions in Northeast Bharat. Now, the challenges are many, and I think a lot of us who have been scholars in this region, who have attempted to research this region, if I may say so, we might not have a lot of consensus on a lot of the issues. But I'll take the liberty of saying that if there is one consensus that we have, it is based on the fact are extremely complex. They are multidimensional, they are intersectional,
and they are interdependent like nowhere else in the country. I have had the opportunity to do some research in the Northwest frontier as well, and with all due respect to the Northeast frontier and the people of the Northwestern frontier, I would like to say that a lot of the issues there, and we've had a lot of media attention there, a lot of the issues there can be seen in exclusivity. In the Northeast, you cannot see issues in exclusivity. The issues are all codependent. There is a gamut of issues, geopolitical interest in this region. There is security threats from multiple dimensions, insurgency-led gunpoint conversions. These are facts of life. We've had bad policies. We've had isolationist, exclusionary policies. We've had a colonial impact that has had very prolonged emotional sort of, after effects, which we still sort of contend with, And for me to talk about the challenges that we face, these challenges, I will have to talk about a gamut of all these things because I cannot talk about it in isolation. So today, what I propose is I talk about what I consider the meta-challenge, the challenge from within. We tend to look at the threats, we tend to look at, the exterior forces. But I think it's really important to look at what our responsibilities are, we do, and what our own challenges are. And one of the first challenges I think that I would like to look at is to really look at our civilizational continuity. We have to ask ourselves this question: how much do we know our civilizational continuity? How much have we really studied it in depth? What is our civilizational narrative? And if there is one, do we know where the Northeast region fits into it? Do we know where the people of the Northeast region fit into this narrative? And if the people, then do we know what the faith and traditions, what place they hold in this narrative? The problem is, I find, that, of course, all of you are scholars and all of you are, if you were to travel to Pune or Delhi and ask a layman, what do you think of the Northeast? The general perception would be that it's remote, it's tribal. Then you ask that person, the answer will be of people being primitive. What does people being primitive mean? People being primitive means that their ideas are not involved, that their societal frameworks are not involved, their religious frameworks are not evolved, that on the line of evolution, they are somewhere at the bottom. Where we come from, where our civilizational narrative comes from, we don't segregate like this. For us, it's a continuity. We've never looked at tribals as being different, At the end of the day, even the words like tribal, indigenous, these are not religion. I am a student of Christian theology. Let me tell you, we still use these subjects. Our frameworks, our subjects, our theories, the people that we look up to are all from the West. Anthropology itself was a subject that was created by the colonialists to look at the other. It was never created from the inside. One of the first people who came to the Northeast were the anthropologists. The British sent them to study us as the natives. So we today, unfortunately, are still looking at these people and saying, using theories and frameworks and saying that, they are the other. Therefore, the kind of segregation that psychologically has come in between us and a lot of our own people. Let me give you an example. Our education system, our systems of knowledge had the folklore system, the oral tradition. Oral tradition was an established system of passing down knowledge. We've completely sort of wiped it out. Yes, there have been people and scholars who've been trying to revive it, but is it mainstreamed? It isn't mainstreamed as yet, and we have no excuse for it. Why should it not be mainstreamed? What sort of standards of
knowledge systems are we following which are not suited to our civilizational diversity and have no respect for our ancient systems of knowledge? There used to be, what were they called? The great storytelling tradition of the Kathavachaks. Where is that now? So I think this sort of respect for our folklores, this sort of respect for our own, systems of education is very important, and it is a challenge to us, because where is our scholarship that are challenging these theories, challenging these frameworks? These theories and frameworks and subjects that we use to study ourselves are the same subjects that have brought about words like terminologies like indigenous, tribal. These are really new words. They were included by the colonialists in the census, in the early census. Animism. Suddenly now we believe that animism is a religion. It's not even a word from Bharat. We didn't have this in our vocabulary. Moving on, the third challenge. And I know that we are short of time, so I'll keep this really short. Our third challenge, I believe, is our most important challenge. That is the meta challenge. The meta challenge means the challenge of referring to ourselves. How do we refer to ourselves? Have we understood that we need to move away from this sort of labeling, this rampant nowadays, people using words like pagans. We are pagans. Why are we pagans? Who has decided we are pagans? What does paganism mean? The people using it, have they read the literature? Have they read early antiquity literature? Have they read pagan literature? Have they read Porphyry, Celsus, Tertullian? No, they haven't. Because if they would have read that, the pagans themselves, Celsus himself in his book said, the real faith lies with the Indians and Assyrians. So if the pagans saw us as different and as an elevated civilization, then why would we want to belittle ourselves as pagans? Paganism also, one must understand, was never a religion. It was only in context A to the Roman Empire and in context to early Christianity. Paganism comes from the word paganus, which means rural. Now, what does this sort of segregation have to do with us? Rural, non-rural, urban? Does that mean that if you're rural, you're uncivilized? If you're urban, you're civilized? That is a complete antithesis of what we believe. Because on the contrary, what we believe is that attachment to decadence or material attachment is a form of lower evolution. The more detached you are, you're of higher level evolution. But what has happened with the rampant usage of these labels and the misunderstanding of these labels, we now equate being civilized, being modern, being upmarket by the Western standards. And I think these are things that we must really, really, look at, think about, and this is our greatest challenge, that we lack rigor. I'd love to say lovely things and say that, we have great scholarship, which we do. But there is a certain amount of rigor that we lack, and unless we have that rigor, unless we have clarity of mind, and from our own perspective, and not an outsider's perspective, the chances are that our challenges will only increase. Whereas what our focus should be, to create our own narrative based on our own foundations, and hopefully preserve the kind of traditions and faiths that have been preserved by the people against many, many odds and challenges, to leave for our children just the way our ancestors persevered and broke through all odds to leave these wonderful faiths and traditions for us. With that, I would like... भारत आस्था एवं परंपरा, उसका चुनौतियां, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में
और यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने जो सुना पिछले 2 दिन से चल रहे ये जो संगोष्ठी, पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों का भी बात हुआ है, मेरे पहले भी बात हुई है, तो मैं यहाँ पे त्रिपुरा के संदर्भ में ही थोड़ा कुछ बोलूंगा। चुनौती क्या है ये जानने से पहले जो हमारा आस्था और परंपरा, खास करके जो त्रिपुरा के आस्था और परंपरा, इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बोलूंगा। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूर्वोत्तर भारत के बारे में, बृहत्तर भारत का तथा कथित मेनलैंड भारत का क्या धारणा है, ये हम लोगों को, जो हम नॉर्थ ईस्ट में रहते ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। मैं पिछले 30 साल से त्रिपुरा के बाहर में हूँ। 38 years of my life I have been out of my state. So I have been living there, integral part of mainland India, and quite often in different. What is the feeling of the people of the other side of the India, other than northeast? तो जनरली ये होता है कि जो आम जनता, शिक्षित महल हो या अशिक्षित हो, गांव वाले हो, तो लोगों को यही लगता है कि पूर्वोत्तर के जो भारत है उसमें तो वही लोग रहते हैं जो कीड़े मकोड़े खाने वाला, चूहे सांप खाने वाला, इस टाइप के एक नैरेटिव्स भारत के उस इलाका में दिया गया, और जो वहाँ के लोग यही अवधारणा लेके बैठे हैं। हालांकि ये जो अवधारणा अभी जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो ये भी परिवर्तन होते रहा है और हो चुके हैं। तो त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से भी अलग है। त्रिपुरा का हिस्ट्री आज का नहीं है। हमारे जो राजमाला है उसमें 5000 का हिस्ट्री, इतिहास उसमें वर्णित है कि युग से इसका हम वर्णन मिलते हैं। तो त्रिपुरा के जो परंपरा है, आस्था है, वो भी 5000 साल पुरानी है, और तब से हम उसी परंपरा का, उसी आस्था का, उसी विश्वास का, उसी पूजा पद्धति को हम अभी अनुसरण और अनुकरण कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा त्रिपुरा में जब भी हम चैलेंजेस की बात करते हैं, एक बात यहाँ पे जब विदेशी शक्ति या विदेशी जो आस्था या विश्वास जो आए हैं, वो लोग हमेशा यहाँ के एक ही बात पूछते हैं कि ये जो आप जो भी पूजा पद्धति फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वो क्या आपका है? ये एक सवाल हमारे जो युवकों को पूछा जाता है, और जिसमें हमारे युवक युवतियां उसका जवाब नहीं दे पाते, और उससे जो है वो लोग उन्हीं के बातों पे बहला जाते हैं और धर्मांतरित हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में हमने कुछ, तो इसमें हमने देखा कि जो, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि इसको लेकर मैं करीब आज से 10-15 साल से रिसर्च किया है, और त्रिपुरा के गांव में जाके और अगरतला में बहुत जगह पे मैं बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप, और हम लोग यहाँ पे एक तरह का वर्कशॉप करते और ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग 7 दिन का, उसमें रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी करते। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं बहुत विद्वान है, हमारे डॉक्टर शौर्य देव बर्मन है, हम तो उसको त्रिपुरा के एक तरह से एक एनसाइक्लोपीडिया कहते। आपका जब यूथ है तो कहते नहीं, क्योंकि जवाब नहीं दे पाते। लेकिन मैंने इसका भी एक शोध किया तो पाया कि ये दुर्गा का जो हम औषा कहते हैं, वो औषा शब्द भी ये संस्कृत से आया हुआ, और उसी नाम से ये देवी दुर्गा का जो सहस्त्र नाम है उसमें एक नाम है ओसो, ओसो से असा हुआ। और राजस्थान में एक मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, उसमें उसके अशिया माता का मंदिर कहा जाता है। मैं खुद भी वहाँ विजिट किया, वहाँ गया था। दुर्गा या औषा ये हमारा संस्कृति में इतना गहरा मतलब संबंध हो चुका कि हमारा जो परंपरा, हमारा जो फोक टेल है उसमें भी ये औषा का जो वर्णन है, और हमारा जो पूजा पद्धति, और ये भी हमारा ही एक अलग तरीका है जो मेनलैंड इंडिया में जो करते हैं उस तरीके से हम नहीं करते।
तो इस बारे में लोग जब कहते हैं कि नहीं ये तो आपका नहीं है, फिर मैंने उसका स्टडी किया, देखा कि आज के संदर्भ में जो दुर्गा पूजा हो रही है हमारी भारतवर्ष में, ये कब से शुरू हुआ। मैंने देखा कि ये 1664 में ताहिरपुर के राजा पहले ये दुर्गा पूजा जो मॉडर्न तरीका से शुरू किया था, वहाँ के राजा कोच राजा ने। लेकिन त्रिपुरा के संदर्भ में अगर हम देखें तो दुर्गा पूजा आज का नहीं है। जो हमारा अभी यहाँ पे देवता मुरा, छवि मुरा भी जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक पत्थर में मूर्ति है, लोग वहाँ जाने के लिए तड़पते हैं, जाते हैं। एक हिस्ट्रिकल के साथ साथ वो एक रिलीजियस साइट भी हुआ है, वो एक टूरिस्ट साइट भी हुआ है। तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं, वहाँ पे अगर देखते हैं देवी दुर्गा का मूर्ति, तो उसमें बिल्कुल ही हमारी जो त्रिपुरी जनजाति का जो चेहरा है बिल्कुल वही है। और वो आज से 1300 से 1400 साल का पुराना मूर्ति है। 1300 1400 साल का वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी उसका स्टडी हुआ, उन लोगों ने भी देखा है कि ये 700 to 800 AD में उसका उस पत्थर का मूर्ति का खनन हुआ है। तो उस हिसाब से भी देखें तो कम से कम हम 1400 साल पहले से ही दुर्गा देवी का हम पूजा कर रहे हैं। और जबकि वर्तमान का जो दुर्गा पूजा है वो अब 600 400 500 साल का पुराना है। तो ऐसे पौराणिक जो भी देव देवी है, जैसे कि शिव है, में भी ये जो 14 है उसमें से सिर्फ 3 देव देवी जिसको साल भर में पूजा जाता है। बाकी 14 देवता सिर्फ जो खर्ची पूजा है जो 7 दिन का होता है उसी दिन पूजा जाता है। बाकी 3 देवता उसमें शिव, पार्वती और गणेश, उसी का पूजा हो रहा है। लेकिन हम लोगों को फिर भी कहा जाता है कि आप लोग तो मूर्ति की पूजा नहीं करते हो, मूर्ति का पूजा तो वो लोग करते हैं जो मेन लैंड का है। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर देखें सिर्फ माँ दुर्गा का ही नहीं, शिव जी का सबसे पुराना अगर मूर्ति है तो ऊनाकुटी में है, वो भी आज का नहीं है, वो भी 1400 साल 1300 1400 साल पुराना मूर्ति है, वो भी हमारा ही है। तो ऐसे हमारा जो 14 देवता उसमें भी मूर्तियाँ है, वो भी हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो विदेशी जो ताकत है उन लोग हमको यही पूछते हैं कि मूर्ति का पूजा तो आपका नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग एक के बाद एक इस तरीके का एनालाइज करते, तो हमारी जितना भी विश्वास है, पूजा है, आस्था है, ये सब जो बृहद भारत का जो पूजा पद्धति है, जो देव देवियाँ है, वो एक है और अभिन्न है। नाम थोड़ा अलग हो सकता है और जो पद्धतियाँ थोड़ा सा अलग हो सकता है। मैंने आज से 4-5 साल पहले दिल्ली से कुछ मूर्तियाँ माँ देवी दुर्गा माता की मैंने मूर्ति एक मंदिर में दान किया था। मैंने आग्रह किया था कि इसमें बलिया ना हो, बलि प्रथा ना हो। लेकिन मैंने 2-3 साल का बाद जब मैंने वहाँ पे आया तो पाया कि वहाँ पे खून पड़ा। Seminar on Sane Thoughts, a seminar on spirituality by foreign intellectuals, and a presentation of folk arts of northeastern states. I extend a hearty welcome to our honorable moderators, Shri Prafulla Ketkar, Shri Harshal Vivandik, foreign delegates, academic luminaries, research scholars, students, ladies and gentlemen, in this special session on presentation of papers and perspectives by students of neighboring countries. So it's my privilege to invite our honorable moderator, Shri Prafulla Ketkar, editor, organizer. I am immensely pleased to invite Shri Harshal Vivandik to take his seat on the dais. I would like to introduce Shri Hari Foundation and Vishwatmak Sant Vichar Sammelan team since its first edition. So I hand over the session to Shri Harshal Vivandik to invite our foreign delegates to present their papers. Please, sir. And also to introduce our moderator, Shri Prafulla Ketkar, to the academic luminaries present in the hall. Please, sir. In our first edition of Vishwatmak Sant Vichar Sammelan happened in Kolhapur, we had foreign delegates
They are especially the foreign students who are studying in Indian universities. Last time we had a delegate from Eastern Europe, Africa and Sri Lanka, and they talk about their respective religion and peace. Since the current Sammelan is happening here in Tripura, this time we have delegates from neighboring countries. We have from Nepal, Mr. Thar Thana from Myanmar. He is a PhD student. He is doing PhD in sociology. Please come. Then I would like to welcome Mr. Nar Ching Meng from Mongolia. She is doing her master's in social work. I would like to welcome Mr. Amit Kumar Khushwa from Nepal. He is doing his master's degree. Bangladesh, and she performing arts. In sociology from MS University, Baroda. He will be talking about cultural form of worshipping Ashtalakshmi and how. So today I'm proud of myself and also most of the ancestors of the current Burmese Indian community in the mid-19th century to the separation of British Burma. This is a short history in Burma. So the next one is I would like to tell you cultural forms of worshipping Ashtalakshmi from Myanmar. People have several religions before this. I asked some Burmese Indians how they are worshipping in Myanmar, how they are praying, so I interviewed them. Some people, Indian Burmese and Tamils and Bengal and the other religion. So regarding this case, I asked some Burmese Indians about Ashtalakshmi. So I wanted to talk about Ashtalakshmi, how Burmese Indians worshipping goddess Lakshmi, about cultures. Ashtalakshmi is the goddess of wealth and prosperity, especially when Burmese Indians are holding in a birthday party, wedding party, a new house party, and then before celebrating Burmese New Year festival. On the other hand, as a special day, Lakshmi festival are celebrated within July 15th and 16th and August 15th and 16th. It depends on cleaner. And every Friday. Now, this idea of feminine divinity. Divinities can be seen in a feminine form and not just in a masculine form, is only available in non-Abrahamic religions. In Abrahamic religion, there is no concept of feminine divinity. Eve is brought because of sin. Adam was born. Adam was created by God, not Eve. The entire feminist movement was against church, just because of this. But in devotional literature, entire devotion is in form of femininity. And that's why there is a concept of Mauli. So motherhood, that instinct of motherhood in creation and prosperity, it's not just giving birth to somebody. Germinating certain ideas is also a kind of motherhood. You have to nurture that idea. You have to spread. You have to take it forward and then live. So, this is another second important feature. Then, continuous awakening. It's not happened that, I did bhakti, I attend something and tomorrow I have left. No. So whatever happening around you, all devotional literatures have reacted to it and did some kind of social awakening through bhakti. So bhakti is not for my individual salvation. Bhakti is for collective salvation. It's for goodness, happiness of all.
विश्व का कल्याण, universal happiness, not greatest happiness of the greatest numbers, like Western worldview says. It's not imposing others. It's not bringing others in something. No. African trader, many traders from India went to Africa, to Bali, Myanmar. They didn't impose their religion. They didn't impose their culture. They started trading. Because of that, their practices, some people got inspired, some started following. They continued their indigenous faith and they got inspired by some other. So here we find a unique feature. That unique feature is, and I always tell Rami, she's there, if there has to be a meta-narrative of Indian civilization, the grand narrative of Indian civilization, then it can be encapsulated only in one thing. If Europe has given us political democracy, one person, one vote. US has given us the idea of economic democracy. Everybody has a right to choose his or her own profession. That is idea of America. What is idea of Bharat? What is idea of our Eastern world? What is idea behind this Lakshmi, Saraswati and various forms of this diverse expression behind oneness? That idea is spiritual democracy. This is the only worldview, thought, devotional literature, bhakti, where everybody is allowed to choose his or her own God, deny the existence of God, create new God, declare yourself a God, accept somebody as guru, say that I don't believe in God, and still you can do bhakti. This is spiritual democracy. This spiritual democracy is celebrated and nurtured through our devotional literature, songs, kirtan, namjap, whatever you call it, wari, yatras, melas, and all of them were collective, not individual. Individual mukti you can do. Individual sadhana you can do. In art form also, you have an expression that is through devotion. It is not forgetting everything and dancing. No. It is a sadhana. That is also bhakti. And that's why this particular conference becomes very important, because it allows to build us bridges through bhakti, through devotional ideas, that binds us as human beings. Because if this is the origin, this land of spiritual democracy is the mother of spiritual democracy also, and that allowed everybody to exist with his or her own path. We don't kill anybody because he or she follows some different path. We don't force anybody to change the path. That idea has to be taught in this part of India, because this land unfortunately got polluted with colonial ideas, colonial persecution through instrument of religion. Many communities in this area got colonized mentally, culturally, uprooted through from their local community traditions, and they have lost this treasure of devotional literature, thought, songs. And therefore, to build the bridges, to connect with the roots, this is a process of connecting with the roots. And I'm really happy that Madan Maharaj ji and all the organizers, took this effort. There are more than 3,000 satras in Northeast. हमारे यहाँ पे जैसे मठ, मंदिर, अलग अलग समाधि परंपराएं होती है भक्ति की,
ऐसे 3000 सत्र है। संदीप जी ने कुछ परंपराओं की केवल बात की, वो तो ब्रॉड परंपरा है, डोनोपोला है या शंकर देव की परंपरा है, बट भक्ति में 3000 सत्र है। इन सत्रों के साथ यदि हम एक कॉमन डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं, इफ वी एस्टैब्लिश अ कॉमन डायलॉग, आइडेंटिफाई देयर व्यू अबाउट व्हाट इज आइडिया ऑफ बर्थ, व्हाट इज आइडिया ऑफ लाइफ, what do they think about death, what do they think about environment, prakriti, the nature, and they will give you the same answer that somebody who is not anglicized in other parts of India. They will also talk prakriti as ma. They will also talk land as ma. Nepal, national anthem is Matrubhumi. You go to Sri Lanka, सिंहली भाषा में है गीत, उनका राष्ट्रगीत भी सिंहली है, लेकिन गीत क्या है? अथ श्रीलंका माता. Why? I'll just make my last point, and that should be the churning point for everyone. जो आधुनिकता शुरू हुई पश्चिम में, उस पश्चिम की आधुनिकता में एक फंडामेंटल क्वेश्चन था. कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, सब लोग एक क्वेश्चन के वजह से चर्च से, बाइबल से लड़ रहे थे. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? What was they experimenting about? What was they challenging? Cooper talked about rationality, modernity, experiment, scientificism. They raised the first question that Earth is not flat but spherical. It's not the sun that is revolving around Earth. It is the Earth that revolving around itself and sun. What happened to them? They were doing this in 14th, 15th, 16th century. What happened to them? They were persecuted. One was put in jail for 30 years. One was forced to consume poison. All of us are studying geography for ages. क्या भाई नेपाली में क्या कहते हैं ज्योग्राफी को? नेपाली में ज्योग्राफी को क्या कहते हैं? स्कूल में पढ़ा होगा ज्योग्राफी, पक्का? हाँ. बंगाली में क्या कहते हैं? पक्का? तमिलनाडु में चले जाइए, केरल में चले जाइए, सिंहली में चले जाइए, भूगोल ही है पिछले 3000 वर्षों से. अर्थ इज स्पिरिकल, दिस यूनिवर्स इज स्पिरिकल. भूगोल और खगोल शब्द आपको भारत की हर भाषा में मिलेंगे. किसी ने किसी को काटा नहीं, कम से कम आर्यभट्ट के समय से तो है ही. जब से जीरो है तब से भूगोल है. वहां पे 15वीं शताब्दी में कोई ये कह रहा है कि अर्थ इज स्पिरिकल, दैट्स व्हाई चर्च इज किलिंग हिम, एंड दे आर सेइंग दिस इज द मॉडर्निटी यू शुड फॉलो. और आर्यभट्ट पहले से कहकर गया है जीरो के बारे में ही, भूगोल के बारे में ही, खगोल के बारे में ही. उसको कहते हैं ये रिग्रेसिव थॉट है. नाउ दिस इज द लैंड विच डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन religion and science, spirituality and science. Devotion allows us that amalgamation, that balance between adhyatmikta, spirituality and material prosperity, that balance between science and spirituality, that balance between environment and economic development, that balance between manhood and feminine. This balance is possible only with this ancient thought which has traveled to us from generation to generation through devotion. I think this is a great bridge building exercise, and this happening in Tripura is even more important. That femininity, that feminine divinity is really celebrated here. Let us pray for
this feminine divinity, that this idea of spiritual democracy thrives and triumphs and guide entire world for universal peace and coexistence. I hope this Ashtalakshmi Vichar Sammelan becomes a building bridge, a bonding bridge, a bridge that will create a foundation for spiritual democracy, for universal peace and coexistence. Thank you for inviting me and allowing me to moderate this difficult session. Thank you. थैंक यू प्रफुल्ल जी. सब लोग यहाँ पे अन्नपूर्णा को भूल ही गए थे, आप बात कर रहे थे. Now I would request Dr. Kalpana Hazare to felicitate the panel, starting with Mr. Prafulla Ketkar. Dr. Kalpana Tiwari Hazare to felicitate our honorable moderator, Shri Prafulla Ketkar, with ceremonial scarf, bouquet, and a memento as a token of love and appreciation. Thank you so much, ma'am. I invite Dr. Kalpana Tiwari Hazare to felicitate Shri Harshal Vivandik with ceremonial scarf, a bouquet, and a memento as a token of appreciation. Thank you so much, ma'am. So I request ma'am to felicitate our foreign delegates and to do the honors with the certificates. First, I invite Mr. Tharthana Lu. Tharthana Lu from Myanmar has been felicitated by the organizers with a ceremonial scarf, bouquet, and a memento. Thanks to all. I request our felicitation team to felicitate our foreign delegate, Miss Narangchimang Narangal from Mongolia, with a ceremonial scarf, bouquet, and a memento, and a certificate of participation. Thanks to all. I'm immensely pleased to invite our felicitation team to greet our next participant, Mr. Amit Kumar Khushwa from Nepal. With a memento, ceremonial scarf, and a certificate of participation.
Thanks to everyone. I would like to invite our felicitation team to greet our next participant, Ms. Joyasri Biswas from Bangladesh. With the ceremonial scarf, bouquet, and a memento, and a certificate of participation. So thanks to everyone for conducting this special session. I would like to thank the moderators, the foreign delegates, and the audience for listening to this enriching experience and to their valuable discourses presented in this session. So we have come to the end of this special session. So I would like to invite our guests present in the hall to join for lunch at Ravindra Bhavan. So we are going to resume our next session at 2:35 p.m. because our tourism minister is going to arrive shortly. We are going to start our academic session 4 at 3 p.m. So before that, I request all the participants to present over here. So thanks to everyone. The present session, Northeastern Bharat, Tirth Yatra and Tourism Potential. In recent years, Northeast has become a hub for tourists. Its mesmerizing and untouched greenery, memento and bouquet as a token of love and appreciation. Thanks to the felicitation team for greeting our honorable guests. I request the felicitation team to greet our next speakers, Shri Gangadhar Krishnan. With the ceremonial scarf, memento and flower bouquet as a token of love and appreciation. Job in 2018 and got into full-time family travel. He owns a meaningful and niche travel startup focused on responsible and sustainable family travel with young kids and elders in Northeast India. He also enables rock climbing, rappelling, and overnight family camping for families in and around Hyderabad. They don't have a website, YouTube, or blog, and don't get into advertisement. Their own family travel is their advertisement. His WhatsApp status documents their journeys and concepts on unschooling and road schooling. WhatsApp status is the most detailed update that people follow. So they did a life-altering 90-day family trip in Tata Nano in 2019, 13,000 kilometers, 15 states, and 3 international borders. After that, they pulled out kids out of the school with their consent. He has been involved in weaving a life around travel and yoga. His wife is Ramya. He is Gangadhar, nicknamed Gangu. They have twin daughters of 12 years, Ananya and Amulya, and live in Hyderabad. So they practice unschooling and road schooling in Northeast India. Our first speaker. Second speaker is Dr. Veenu Pant, a professor and head, the Department of History, Sikkim University. She has been teaching and into research for 22 years. Professor Pant has published extensively and is on the editorial boards of reputed journals. She has special interest in unraveling the history of Bharatiya knowledge system, especially the scientific knowledge associated with the traditions. Her research interest includes documentation of indigenous knowledge and practices. At present, she is associated with Ministry of Culture, project documenting histories of unsung heroes in the freedom struggle. Our third speaker is
Shri Morningstar Khongto from Rangthilingan village in Pinursla, East Khasi Hills, Meghalaya. He has been living as a road bridges activist, working for conservation of living roots architecture, constituting mainly the living root bridges. Since he dropped from high school in 2016, he has been fully dedicated for serving the community in protecting and reproducing the living root bridges. He had also to collaborate with many international relations, especially Technical University of Munich, for research and education through internships. He had also worked with many media, national and international TV, especially the Green Planet of BBC and French television. He is also the recipient of the Young Achievers for Environmental and Ecology subjects from Dalmia Cement, and also the recipient of Environmental Champion Award from the Rotary Club, Shillong. Presently, he is working with Meghalaya Tourism through the Meghalayan Age Limited, Shillong. Our last speaker, Srimati Manasi Sinha, the author of Saffron Sword series. She is a researcher on Indian history and ancient temples. She is the founder of e-magazine myindiamyglory.com. So it's our privilege to listen to all the speakers. So I hand over the session to the moderator, Dr. Shankar Roy. Please, sir. Good afternoon to everybody present over here. The ceremony organized by Ashtalakshmi Sant Vichar Sammelan. Today is the fourth session, and you have known the esteemed speakers, name of the esteemed speakers. And today we are going to start the program. At the very outset, I thank the organizer of the Ashtalakshmi Sant Vichar Sammelan for organizing such a wonderful topic, which is the need of the hour. In this August gathering, I welcome the esteemed speakers who have come to Tripura, which is located in a corner of Bharat, to aware us regarding our social, cultural, spiritual and traditional identity. Northeast Bharat is also a place of rich cultural and spiritual heritage. In this session, we will come to know about many things about the Tirtha Sthana in Northeast India, and eminent speaker will speak about all these things. I also welcome the esteemed listeners in this August gathering of organized in this hotel. The topic of the session is Northeast Bharat, Tirtha Yatra and Tourism Potential. So there are two topics. One is Tirtha Yatra and Tourism Potential. So it is blended. Two topic is blended over here. According to the Sanatan philosophy, life of a man passes through four phases: dharma, artha, kama, moksha. Other philosophy do not believe in moksha. Among all these four, other philosophy do not believe in moksha. This is the reason why they always fight among themselves and others with others. They may have wealth and get pleasure, but don't have peace. Now they are realizing their fault and attracted towards our Sanatan philosophy. Our parents bear a dream to have a Tirtha Yatra, Tirtha Darshan before their death, a step towards moksha prapti.
after Tirtha Darshan, our mind changes a lot. That is why our ancestors established many temples in different places of Bharat, and with the same time we can know about Bharat also. After visiting different places, we can know, we can have Tirtha Darshan along with Darshan of Bharat. Previously, communication was very tough, so nowadays everything has been improved. We can have Tirtha Darshan anywhere. So if it is blended with all tourism facilities, so I strongly believe it will bring social harmony and peace. I invite our respected Minister of Tourism to start the discussion, and after that the discussion over, because many speakers are there, and you are allowed to ask any question if you want to know. So it will be a very interesting topic then. Okay, please, sir. पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा सौभाग्य हुआ है जो अष्टलक्ष्मी संत विचार सम्मेलन जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो पहला दफा हमारा स्टेट में 2 दिन के लिए हो रहे, तो इस सम्मेलन हमारा छोटा स्टेट के लिए टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में, नॉर्थ ईस्ट रिटर्न भारत तीर्थ यात्रा सबके लिए बहुत एक महत्व रहेंगे। तो मैं पहले जो अष्टलक्ष्मी संत विचार सम्मेलन के लिए ऑर्गेनाइजर्स सभी, जैसे कार्याध्यक्ष साहब से लेके जितना सारे एमिनेंस हमारा साथ बैठा हुआ है जो उसमें बारे में बात करेंगे, सभी जो मीटिंग में जिसमें अटेंड है, तो सबको मैं अपना तरफ से मेरा सरकार का पर्यटन विभाग की तरफ से तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो मेरा पहले मैं बोलना चाहता हूँ जे त्रिपुरा एक छोटा स्टेट है जिसका जियोग्राफिकल एरिया ओनली 10,491 स्क्वायर किलोमीटर का। तो अभी इसमें 2/3 डिपार्टमेंट फॉरेस्ट देश का बहुत सारे देशों के साथ, राज्यों के साथ जुड़ गया। आगे भी बहुत जुड़ना है। एयर कनेक्टिविटी सिर्फ विद इन हमारा इंडिया के अंदर नहीं, कुछ जल्दी एयरपोर्ट महाराजा ओपनिंग किया गया, तो उस एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, वो भी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद से। जस्ट ज्यादा दूर नहीं है, जो चिटागांग के साथ पहला कनेक्टिविटी होगा, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वो शुरू होगी। इसके थोड़ा बाद ही हम लोग कोशिश करेंगे जिसमें दूसरे सिंगापुर, कोई दुबई वगैरह अगरतला से उसको कनेक्टिविटी करने जा रहा है। इससे सिर्फ त्रिपुरा के नहीं, बाकी नॉर्थ ईस्ट का दूसरा स्टेट में भी वो से एयर कनेक्टिविटी भी जुड़ने, रेल कनेक्टिविटी हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का इसमें कम से कम जो टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए जो सोचा है, पता आया था, एक दिन आया था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसको बात हुआ, इरादा था, उन्होंने आया, एक दिन में आया, सुबह जाके पूरा उन्होंने घूम के उन्होंने फिर वापस चला गया। तो इसको इतना इंपॉर्टेंट है जो आज इसमें एक कहा है जो हिंदू मैथोलॉजी का उस पर कहा होता है, जो ऊनकोटी किस लिए ऊनकोटी का नाम हुआ? ऊनकोटी 1 करोड़ जैसे लगता है, तो खुद भगवान शिव ने उनको सर
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। उसमें हमारा डायरेक्ट डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म डायरेक्ट नहीं काम करने पा रहा, लेकिन बहुत अच्छा। तो इसीलिए हमको 8 मोनूमेंट्स है, बहुत सारी, पिलाक जैसा हिस्टोरिकल एरिया। तो उसके तो ये जो तीर्थ यात्रा का जो उसमें आपको ये जो आपको जो पॉइंट रह गया ना, तो मैं लगता हूँ हमारे त्रिपुरा में तीर्थ यात्रा का सही से गुजरने में तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा सेक्टर इस स्टेट बनेगा, बन सकता है। हो रहा है कम से कम बहुत सारी पिलाक फेस्टिवल, खाची फेस्टिवल, जब बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध को होता है, सब सर्किट बना हुआ है त्रिपुरा में इसमें होता है। तो इसमें लिए तो इसमें अभी हिस्टोरी का निर्महल कंस्ट्रक्शन बनाया था, जैसे नेशनल उस पर लेवल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस, तो उसमें इसको तो पकड़ जाता है जो निर्मल इज वन ऑफ दैट हिस्टोरिकल प्लेस में होता है राजा में। तो इसमें निर्मल है, उज्जैन तो पहले से आप लोग देखा है, एक थोड़ा बाद में अभी जाएंगे, शुरू भी किया, बहुत पहले से राजा राजकिश माणिक्य बहादुर बनाया था। पुष्पवन तो पहले से जो वो भी राजा वो बनाया था। उसमें हम डिजिटल म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर, ये डिजिटल बहुत बड़ा है, तो उसमें भारत सरकार में गया तो उसमें बना रहा है, जो कल्चर को एक साथ में मिलाना है, जो उसमें उसको एक्सप्लोर करने पे घिरा हुआ है, छोटा बड़ा मिला के। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट को सजाया, बहुत नया नया करके +1 स्टाइल जिसमें होके हम लोग लॉघाट बनाया। बहुत सारी 5 जिसमें आइलैंड को हम लोग चुन लिया, जो 5 आइलैंड में हम लोग हमसे बहुत सजा रहे, कोई एडवेंचर टूरिज्म, कोई भी बहुत कुछ काम कर रहा है जो उसमें कोई भी टूरिस्ट आए, पूरा नेचुरल, पूरा एकदम राइट। So let it any kind of tourism. First is that person who is coming here, irrespective of who it is, needs to understand that you are coming to 24 karat gold and we are 22 karat. That is first we need to know. Right? So we have to develop like that. So that is why I thought I will not have a website, because website mein koi bhi jo paisa hai, they can just pay me. After that I don't have control. Now just by the way he says hello or she says hello, I know who is coming. So bas usko, if you don't like that person, if I'm not very sure that they will represent their state properly to the Northeast people, I'll just give a high court. They will not come simple, at least not through me. I'm not saying I can stop them. Who am I to stop them, isn't I? I don't want to be the part of that. Right? तो सिक्किम में ये बुद्धिज्म के लिए भूटान लोगों को हमको, then people of Arunachal Pradesh, see, जब टूरिज्म के बात करते हैं, somehow everybody thinks ये mainland है, ये northeast है. No, there is no mainland, there is no northeast. It is all one Bharat, one Hindustan. Very simple. Okay, let's not be under this that alienation हो गया, वो हो गया, वो हो गया. When I travel, nobody bothers about my religion. Nobody has even asked me, are you Hindu? Right? Only thing is, because I have this on my head, they give me more respect.